उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। हरे कृष्ण। So, we'll discuss on this topic of making of a transcendental remedy. Hmm? Hare Krishna. On arrival in voice, this is one of the topic I prefer to discuss with devotees. How to make a transcendental remedy of our own personality, because um, the nature of material world is everything is going down. Hmm? Everything is getting degraded or destroyed by default. Correct? You cook something today morning, by evening it gets spoiled. You make a building today, after few years that building gets destroyed. Hmm? Anything you throw up in the sky, very soon it will come down. So any positive creation or endeavor we do that in this material world, that doesn't sustain for long. And there has to be a constant effort from our side. Hmm. So it is explained that while swimming in the river, if you do not go upstream, then by default we are anyways going downstream. That is a nature. So if you observe very carefully, um, this
our life. Hmm? So, in general, if we see anyone who is not endeavoring to improve himself, day to day basis, uh, or weekly basis, monthly basis, yearly basis, not just day to day, even moment to moment. If one is not very careful, one is not very alert, then very soon he will find he's lost the match. He's getting degraded day by day, month after month, year after year. But if he's very careful and if he undergoes a particular process, then instead of getting degraded, he can enhance himself. So this one devotee was sharing this. He said that we all are like milk packets which come to our doors early in the morning. सुबह सुबह दूध आता है ना, दूध का पैकेट आता है. पहले दूध वाला आता था. I don't know what happens here, whether some milkman comes and gives the milk, or we get the milk packet at the door. Hmm? Milk packet comes. Huh? So milk packet, when it comes on the door, if you just allow the milk packet to be there, hmm, then what will happen? दूध का पैकेट आया है, दरवाजे पे वैसे ही रख दिया और कोई टेंशन नहीं लिया, तो क्या होगा? दूध का रबड़ी बन जाएगा. हाँ, रबड़ी बनेगा, फट जाएगा, दूध सड़ जाएगा. तो we all are like this milk packets, and if we just subject ourselves to NTP STP. What is NTP STP? हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस होता है ना. स्टडीड दिस इन फिजिक्स और केमिस्ट्री. NTP STP, if you just subject yourself to this normal temperature pressure conditions, then the material nature is degrading you. So we all are like this milk packets, and most of the students, especially when the vacations come or the holiday comes, they just subject themselves to normal temperature pressure conditions. Correct, ना? Just flow with the wind. जैसा चल रहा है चलने दो. जैसे समय आएगा, जैसे जैसे भगवान की इच्छा होगी, इन देयर लैंग्वेज, गाड़ी चलते रहेगा. बट इफ यू जस्ट allow yourself to be like that, by default we are going down. That is the nature of this material world. Everything is going down, everything is getting destroyed, and there has to be a constant endeavor to keep up. So this milk packet, we can do like three things can happen. One thing is you allow the milk packet to be there on the door and it gets spoiled. But if you subject it to a process, you can preserve it. What is the process? What we have to do to preserve it? Boil it. Very nice. We have to put it in the pan and boil it. And you heat it to a certain extent, then you can maintain it for some time. That is second thing you can do. But third thing is you can even make a very nice product out of it. Enhance it. Make it a very nice offering to Radha Madhav, which will also be long lasting and also be very pleasing to everyone. Correct, no? So that is third thing. But for that one has to go even more. For that one has to undergo even more rigorous process. Correct, no? If you want to make a rabdi out of milk, you want to maintain the milk, okay, certain process, thoda sa gram karam. But if you want to make rabdi out of it, then there is a rigorous process. Same way we have to decide. We are like this milk packets. What do we want ourselves to be? If we want ourselves to get degraded, then just subject yourselves to normal temperature pressure conditions. What happens in the hostel? Just allow the weather to act on you, allow the atmosphere to act on you. Another thing we can do is we can maintain ourselves by doing little goodness life, some regulated life, some disciplined life, some goodness life. Then those students, they are preserved to some extent. But if we want to make ourselves a very nice offering in the plate of Krishna, then one has to become ready to undergo a rigorous process. So let us discuss the steps involved in making a rabdi. How many of you know how to make a rabdi? Okay, only one devotee here. Huh?
एक दो डिवोटीज आते हैं, so we'll, okay, okay, slowly many devotees are raising their hands. So we will take their guidance. How to make a rabdi. Now if imagine you don't know anything about making rabdi, and you have got the milk at your door in the morning, and you want to make a rabdi out of it. You don't have any idea रबड़ी कैसे बनता है, क्या होता है, आपने सिर्फ चखा है, लेकिन आपने कभी बनाया नहीं है. Then what is the first thing one has to do? हाँ, जिसने बनाया है उसको पूछना होगा. We have to take guidance. That is the first step in making a rabdi out of ourselves. The first step is we have to take guidance from those people who have already walked that path. So, spiritual life, uh, if we practice it without guidance, then it will create a big chaos. It will lead to a big failure in our life. Already, people, you know, I mean, material world itself is so difficult and complex to understand. We don't understand even our own body completely. What to say of understanding the material world, and then what to say of understanding the spiritual subject matter. It's inconceivable. It's beyond our capacity to even imagine what spiritual subject matter is like, what spiritual world is like. So, without guidance, even material field, we need so much guidance. Correct, no? The material field, simple thing. Hmm. For simple thing, people are joining coach now. Hmm. Can you guess? What is one of the simplest thing for which people are joining coach that you have heard of? अरे ये क्या है इसके लिए कोच? फॉर एग्जाम्पल द सिंपल थिंग लाइक रनिंग. दौड़ तो कोई भी सकता है ना, बट दोज हु आर लाइक रियल चैंपियंस, दे डोंट बिकम चैंपियंस विदाउट हैविंग अ कोच. सिंपल थिंग है ना, दौड़ना ही है यहाँ से वहां. उसके लिए भी कोच लगता है. करेक्ट. व्हाट एल्स? और क्या सुना है आपने? पर्सनली डोंट नो. ओके, दैट इज लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स थिंग. सिंपल थिंग, अरे इसके लिए कोच लगता है. सोचिए किस किस चीज को, या फिर हमने भी कोचिंग लिया है ऑब्वियसली. मोस्ट ऑफ आवर कोचिंग वी हैव गॉट फ्रॉम आवर मदर्स, दैट्स व्हाई वी डोंट रियलाइज. हाँ. ओके ब्रो, बता रहे फैशन शो में जो वॉक करते हैं उसको बस रैंप पे चलना है यहाँ से वहां पे, उसके लिए कितना ट्रेनिंग होता है. गर्दन ऐसी होनी चाहिए, सिर ऐसा होना चाहिए, कंधा ऐसा होना चाहिए. और यही पेस में चलना है, ऐसे ही चलना है. सो details to that. So even for simple things, we need coach. Then why not for a complex thing like this? Imagine you start making rabdi without taking any guidance from anyone, not even a YouTube channel. So there's no possibility. The same way, our taking guidance is like our compared to it's compared to our taking guidance from our mentors. All of you are mentors. We have some mentors, we have some facilitators, we have some spiritual guides, we have some caretakers, counselors. It's very important that we take their guidance and then act, and not just act independently. If we keep doing like that, then sorry sir, पता नहीं आपका क्या बनेगा. रबड़ी बनेगा या फट जाएगा या फूट जाएगा. So if you don't want to take any chance and if you want to really make it a successful offering, then it's best if we take guidance. And simple thing, because it's a completely new path for most of you now. Correct, no? This first time you are adventuring on this path, then why not take guidance? So that's why it's very important that we learn from those who have already done it successfully. And imagine you have got the guidance. Then what is the first step you have to do? Milk packet is lying on the door, and you want to make a very nice, delicious rabdi out of it. What is the first step you have to do? सबसे पहले क्या करना होगा? बॉईल करना होगा. उसके लिए पहले क्या करना होगा? ओके, लेके पैकेट को काटना होगा. करेक्ट ना? जो पैकेट अंदर है
पैकेट के अंदर जो दूध है उसको बाहर लाना होगा। अगर पैकेट के अंदर ही रहेगा तो रबड़ी बनेगा। दिस इज कंपेयर टू ओपनिंग अवर हार्ट, टू अलाउ द प्रोसेस टू एक्ट इन अवर लाइफ। अगर हम बंद रहेंगे, हम्म, अपने आप को अलाउ नहीं करेंगे तो उसका रबड़ी नहीं बन पाएगा। पहले हमको खुलना पड़ेगा। जो भी हमारे डाउट्स है, जो भी हमारे कंसर्न्स है, we'll have to express it, we'll have to open. If you keep your life a complete secret, your doubts complete secret, for various reasons. One reason is, oh, people will feel I am fool, or people will laugh at me, whatever may be your reason. But it's important that we open up ourselves after coming here in voice, especially any doubt that we get. If the doubt is there, you don't discuss about it, you just keep in your heart. Very soon, you will see the doubt has increased to the degree that you lose all your faith in the path that you are walking now. There was a king who had announced that no one can eat, no one can kill and eat any foxes in my country. Because in this kingdom, many people were cutting the fox, right? CR, and they were eating him. So he announced, if I see anyone cutting a fox, that will be the last day of his life. And but there were many people who were addicted to eating the fox. So uh, one person secretly, he saw nobody is there. How we cross the road? Left में देखा, right में देखा, चल दिया. He saw left, right, nobody was there. He caught a CR, fox, and just started cutting. बस थोड़ा सा काटा ही था उसने. And suddenly he saw the king coming. घोड़े घोड़े सुना आपने ये स्टोरी? घोड़ा ना क्या आवाज आने लग गई है, उसने देखा कि राजा आ गया. जैसे उसने देखा राजा आ गया है, उसने क्या किया, उस सीआर को छुपा लिया अंदर. जैसे आई एम वेयरिंग दिस उत्तरी, ही वाज वेयरिंग अ शॉल, उसने छुपा दिया अंदर. एंड द किंग केम टू हिम, एंड किंग केम, सो नेचुरली ही हैज टू ग्रीट हिम, व्हाटएवर हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, जो भी रहेगा. तो किंग सेड, ओ वेरी नाइस, हाउ आर यू. तो by the time he was speaking, the king was speaking to him, this man, he started getting into anxiety. King said, how are you? This is nice, I'm fine. But while speaking fine, he kind of shouted, क्या हो गया? No, you said you are fine. He said, no, no, I'm fine. Any problem? No problem. कुछ प्रॉब्लम है तुमको? कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है. The way you are reacting, it seems there's some serious problem with you. And this person was able to speak also. He said, बस he just started speaking in the sign language. No, no problem. Just go. No problem. King said, देखो पूछ रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ. आई हैव द कैपेसिटी, मैं सारे प्रॉब्लम तुम्हारे सॉल्व. घर पे पैसा चाहिए, नो, या फिर किसी की तबीयत ठीक नहीं है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, जस्ट गो अवे. ठीक है. आई एम ट्राइंग टू हेल्प हिम आउट, ही डजंट वांट टू हेल्प, get helped. So as soon as the king turned away, started going away, this man, he collapsed to death. This man collapsed to death. What had happened is, सीआर को समझ गया कि अभी मैं कटने वाला हूँ. तो सीआर ने सोचा कि इसके पहले कि मैं कट जाऊं, मैं इसको काट देता हूँ. So when he was hiding the fox inside, the fox started eating him. But he was not able to react because king was there. किंग ने देख लिया कि इसने फॉक्स को मारा है तो मर जाऊंगा. मैं ठीक है, सह लेता हूँ, थोड़ा सह लेता हूँ, थोड़ा और सह लेता हूँ, थोड़ा और सह लेता हूँ. सहने में उसका गौर प्रेमानंदे हरी हरी हो, उसका वहीं पे अंत हो गया. So this fox is compared to our doubts. This king is compared to the devotee who comes in our life. He says, प्रभु any problem? No problem. बिकॉज उसको लगता है मैं बता दूंगा तो पता नहीं क्या लोग सोचेंगे, क्या पनिशमेंट देंगे, क्या होगा मेरा. बट if you just hide your problems like this, very soon that will cost your Krishna consciousness. When you collapse to death in his path of bhakti. That's why it's very important. Now that all of you have come to voice, you are going to see many new things. Many unseen things will come to you. Many things you will read which you have never heard earlier. And many doubts will come because all of you are intelligent people.
Prabhupada says, doubt is a sign of intelligence. Any intelligent man will get doubts. Getting doubts is not a problem, but not getting those doubts addressed is a serious problem. So that is the second thing. We have to open that packet. We have to open our heart to our seniors, mentors, devotees. Because, like, I had this doubt when I would read Gita. Hey, this Krishna is such a egoistic personality. मैं अरे इतना तो हम भी नहीं करते. एक बद्ध जीव भी इतना मैं नहीं करेगा जितना भगवान ने किया है गीता में. That's what I used to feel first time when I was shifting to voice. I said, if you ask me to worship Ram, it's okay. Krishna? I should. Anyways, there is no other option. This is the only thing I have to accept. ऐसा ही. So this is very serious doubts I was facing. Why Krishna is telling surrender to me, I will do this, I am this, I am that, I am essence of everything, I am source of everything, I am best of everything. अरे यार हद होती है. ये क्या है? But Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. So I was feeling, this is a serious problem. But later, when I asked this question to devotees they clarified so nicely. And I said, "No, I never thought like this." So after expressing this question, you know, my appreciation for Krishna increased like anything. Hmm. Like some simple answer the devotees gave. Any of you have got this doubt anytime? ऐसा लगा आपको कभी? आपने गीता पढ़ा है क्या? पढ़ा है? ऐसा लगा आपको कभी? Of your very saintly people, so you won't get these kind of doubts. But when I asked this question, the devotees they answered in so many ways. So many ways. One simple answer they gave is Krishna, he has spoken, just few verses about him. Like this, whatever we see in Gita. Gita is 700 verses. In that also, not all verses is speaking about himself. Maybe 300 verses or something, or 400 verses he spoke about himself. But when he starts speaking about his devotees, as Krishna Dvaipadi and Vyas, he is speaking 18,000 verses. So he is just answering Arjuna's questions. Arjuna asking, "Who are you?" He has to tell. If somebody is really a topper, gold medalist, and he's a big achiever, and someone asks him, "Can you please tell me about yourself?" He has to tell. I was a topper, I was a gold medalist. Arjun is asking and Krishna is answering. Simple thing. जो जो पूछा गया वो उन्होंने बताया है. बाकी कुछ क्या नहीं. And he has told in a very you know no, small amount. He did not tell everything. That verse also comes right in Gita. मैं बस थोड़ा सा ही बता रहा हूँ आपको ना. ऐसे तो बहुत कुछ है ना. थोड़ा सा बताया लेकिन हमारी ईर्ष्या इतनी ज्यादा है that we are not able to tolerate it. We cannot bear it. And by glorifying Krishna himself, indirectly he is actually glorifying Srimati Radharani or Bhakti or ultimately his devotees. He's telling, I am this, I am this, I am this, I am this, I am ultimate. And such an ultimate person is becoming chariot driver of Arjuna. Then understand how much more greater my devotees are. No? I may be very great, but greater than me are my devotees. The greatest thing is the bhakti that completely captivates me. So many answers were given by senior devotees to me, and that really shocked me. अरे ऐसा भी होता है. So this is also one of the way to see it. And then I started getting some faith. Okay, maybe I should chant Hare Krishna. So the point is when we now come to voice, it's very important that we keep communicating. We keep opening our heart. We keep expressing whatever small doubts also we have. We should express. We should ask. Because if your doubts are solved in time, you progress very fast, very smooth. But if you do not express your doubts in time, then it will be like ना घर का ना घाट का. ना ही यहाँ पे आप प्रोग्रेस कर पाओगे ना और बाहर का तो अभी छूट ही गया है. So that is the second step that we need to do if we want to make a transcendental remedy out of ourselves.
Okay, so once we cut the packet of the milk, what is the next step we have to do? Okay, so we'll have to pour the milk in the vessel. And how the vessel should be? Clean. Hari bol. Who said that? Hari. Very nice. The vessel has to be clean. Imagine, like our devotees have done cooking yesterday. They made some sabji and rice and poha and whatever things. And the vessel is not washed. As it is, the vessel you bring and pour the milk. कितना अच्छा रबड़ी बनेगा? बनेगा? Hmm? So the vessel has to be clean. And same way, that is one of the first thing we have to take care while staying in voice, that things have to be very neat and clean. Hmm? If things are not very neat and clean and you pour the milk there, the milk will get spoiled. Same way, everything has to be very uh, uh, clean, not only externally but also internally. So, as devotees, we take a bath every day, early in the morning. We wear fresh clothes every day. We clean our place where we stay. Our bedding has to be clean. Our lockers have to be clean. When everything is very clean, you can feel that yes, I feel like being here. I am feeling connected to this place. When things are not very clean, it becomes difficult to connect to that place. Correct? No? If the place is not very clean, तो घर जैसा नहीं लगता है. But the place is very neat and clean, you feel this is my home. Because originally, spiritual world is the most clean place. But to the degree you come closer to that cleanliness, to that degree you feel very much connected in that place. And when the cleanliness is not maintained, when the basic goodness is not practiced, then the practice of bhakti will not be very effective. When things are not very clean, always the beddings are lying here, there. कहीं का धोती लटका है, कहीं पे चद्दर घूम रहा है. And even we are not very neat and clean. सब दाढ़ी मूछ पूछ सब बाल बाल एकदम बड़ा है. It becomes very difficult to you know uh, experience a very clean heart when the externals are not very clean. And at the same time, we want to keep our internals are also very clean. That's why we uh, make sure that we don't never miss the morning program. We attentively chant Hare Krishna. So the vessel has to be clean, and in that clean vessel, when you pour the milk, and then what do we do? What is the next step? Put the fire on. लगाओ आग. और उबालो दूध को. Correct? So what is that compared to? Can you guess? Huh? Start practicing means okay, tapasya. Huh? So next step is we put this vessel on the stove. अगर वेसल को और कहीं पे रखोगे तो रबड़ी बनेगा. वेसल को कहाँ रखना होगा? स्टोव के ऊपर. और स्टोव को बंद रखेंगे तो अरे स्टोव पे तो रख दिया प्रभु जी. रबड़ी बनना चाहिए. नहीं, स्टोव को ऑन करना पड़ेगा, आग लगाना पड़ेगा. आग, और आग कितनी लगेगी? कैसा फ्लेम लगना पड़ेगा? स्लो फ्लेम या हाई फ्लेम? ओके, कोई बोल रहा है मीडियम फ्लेम लगेगा, कोई बोल रहा है हाई फ्लेम लगेगा, कोई बोल रहा है स्लो फ्लेम लगेगा. कितना फ्लेम लगेगा? कैसे पता चलेगा कितना फ्लेम चाहिए? पूछना पड़ेगा. हरी बोल. हमें पूछना पड़ेगा कितना फ्लेम लगाना है. समझ रहे? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ. स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू टेक गाइडेंस. अदरवाइज एट एवरी स्टेप वी कीप स्पेकुलेटिंग. अभी क्या करूं? हाँ शायद आज 64 माला करना चाहिए. हाँ आज शायद मैं ये किताब पढ़ता हूँ. आज शायद मैं नो डिटी वर्शिप करता हूँ. So if you just keep doing things with your own mind, it will be difficult to make a proper remedy. But step by step, so we have to ask, kitna flame चाहिए? So this putting this vessel on the stove is compared to putting ourselves in the fire. And what is a fiery period in our voice life? सबसे ज्यादा फायर कब रहता है हमारे दैनंदिन जीवन में, वॉइस में?
Morning program, Hari bol. So morning program is a fire, which is actually doing the job of cooking, cooking our consciousness, refining our consciousness, condensing our consciousness. So if you are staying in the voice, not attending morning program, then it is like you have poured the milk in the vessel, but not putting on the flame. And after some days you're asking, प्रभु जी भक्ति काम नहीं कर रहा है, ये रबड़ी बन नहीं रहा है, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, हरि नाम में रुचि नहीं हो रही है। अरे फ्लेम पे रखोगे पहले तो बॉइलिंग होगा फिर कंडेंस होगा फिर कुछ टेस्ट आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट मिस द मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम इज द फ्लेम एंड व्हाट इज द प्रूफ दैट इट्स अ फायर। फायर मतलब एवरीवन वांट्स टू गो अवे फ्रॉम द फायर, करेक्ट ना? दूध को जब रखते हो फायर के ऊपर तो दूध क्या करता है, उबलने लगता है और बाहर भागने की कोशिश करता है, करेक्ट ना? और हमको उसको बार बार अंदर रखना पड़ेगा, करेक्ट, चम्मच से हिला हिला के उसको। तो जैसे मॉर्निंग वार्म चालू होता है बहुत सारी चीजें याद आती है। अरे प्रभु जी मेरा कुछ काम था मुझे उस रूम में जाना है, प्रभु जी यहाँ पे ना थोड़ी गर्मी लग रही है, थोड़ा टेरेस पे जाके ना अच्छा चैंटिंग होगा। प्रभु जी मेरा ना थोड़ा सर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा मैं रेस्ट लेके आता हूँ। प्रभु जी मेरा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। वो मॉर्निंग वॉक में टाइम पे ही याद आता है सब, बाकी दिन भर उसको कुछ याद नहीं आता है, करेक्ट ना? जैसे ही उसका चेतो दर्पण मार्जनम के बाद में जैसे ही चैंटिंग शुरू होता है सब कुछ याद आने लगता है। अरे साहब ये भी बाकी था, अरे आज होमवर्क दिया था टीचर ने, अरे एक असाइनमेंट कंप्लीट करना था। तो दिस आर ऑल रीजंस that our mind will give to move us away from the fire of Krishna consciousness। जो आग है जो हमको ट्रांसफॉर्म करने वाली है उससे बाहर भगाने के लिए we will get lot of reasons, but somehow or other we should keep ourselves on the fire। कैसे तो करके make sure that the milk doesn't jump out, then there is some hope that one day you will be able to make that remedy, correct? So after you take guidance, so guidance has to always there. In general, when we want to make something for the first time, we take guidance from the cook, and cook is always standing next to us, correct ना? ओके अभी इतना करो, हाँ ये फ्लेम ठीक है, कितना माला करना है, कितना रीडिंग करना है, कितना साधना करना है, कितना सेवा करना है, दैट इज like the flame। Prabhupada has always given us the standard morning program, which is the appropriate flame for us right now, on which we have full faith and we just subject ourselves to that process. And when you start heating the milk, you see the milk is getting boiled. And then what we have to do? What will the cook tell us to do? अभी मिल्क बॉईल हो रहा है तो क्या करना होगा? जिनको इनको पता है रबड़ी कैसा बनता है, हाँ, उसको चलाना पड़ेगा। फॉर दैट व्हाट वी हैव टू टेक, एक पलटा लेना पड़ेगा, चम्मच या पलटा, करेक्ट, वो पलटा लेना पड़ेगा और उसको हिलाना पड़ेगा, करेक्ट ना? कंटिन्यूअसली उसको उसको गोल 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 घुमाना पड़ेगा। कितना घुमाना पड़ेगा? हाँ पूछ के बताएंगे, 16 माला घुमाओ, हम्म, घुमाते रहो रोज, ठीक है? 16 माला घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो। और वो घुमाना कितना पड़ेगा? सॉरी, कहाँ पे घुमाना पड़ेगा? समझो इफ यू आर गोइंग टू मेक 30 लीटर्स ऑफ मिल्क का रबड़ी, तो आपको एक बड़ा वेसल लगेगा, है ना? और आपको घुमाने के लिए चम्मच चाहिए, और आपका जो टी स्पून होता है आपने ले लिया चम्मच में, और हिला रहे मिल्क, रबड़ी बना रहे बनेगा? चम्मच कैसा चाहिए? बड़ा। और कहाँ पे लगना चाहिए चम्मच? अंदर, अंदर लगना चाहिए, करेक्ट, उसके सरफेस पे बॉटम में लगना चाहिए, और बॉटम पे घिसा ही होना चाहिए, करेक्ट ना? उस ऊपर ऊपर चला के कुछ फायदा नहीं होगा। वैसे ही भक्ति में, नाउ दैट वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ऊपर ऊपर से प्रैक्टिस करके हम ज़्यादा एडवांसमेंट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू मेक मच एडवांसमेंट जस्ट बाय
practicing superficially. We will have to go very deep in our practice. We'll have to go deep in our practice. Because generally, when we are staying in a setup like this, a tendency comes that, oh, I have to show that I'm doing everything perfectly. And there are some devotees who do everything externally perfectly, but nothing is sinking in their heart. कुछ अंदर नहीं जा रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि हर कोई कर रहा है. वो देखा है भेड़ की बकरियां कैसे करती है. बकरी होता है, ships. They walk in a queue many times, and if you put a stick in front of the first ship, the ship will jump. देखा आपने ये? If you put a stick, on the path while when the ships are walking, we just put, तो पहला शिप जंप मारेगा, दूसरा शिप जंप मारेगा, बाद में आप लकड़ी को निकाल दो और देखो क्या होता है. सब जंप मारेंगे, सब जंप मारते मारते जाएंगे, पूरी लाइन, सब भेड़ की बकरियां, सब लोग जंप मारते मारते. उसको कुछ नहीं पता क्यों, क्योंकि पहले ने जंप मारा, दूसरे जंप मारा, तो मैं भी जंप मारूंगा. तो many things devotees practice, in voice or in spiritual life without understanding why they did what they did. उसने ऐसा किया ना, मैं भी ऐसा ही करता हूँ. तो वो ऐसा कर रहा है ना, मैं भी वैसे ही ऐसा करता हूँ. तो हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु in ISKCON Chowpatty, he was giving time and again he would give time to this students in this lady North Hind, what is it? North Hindu orphanage. There was an orphanage in ISKCON Chowpatty temple, and all these orphan people, they were like semi gurukulis, and devotees were trying to preach to them, teach them. So one day, Radha Gopinath Prabhu he came, and all these gurukulis, they were sitting in circles and they were chanting. So they all had, everyone had their hands in the bead bag, and they were chanting circles. How we sit in our voice, four, five devotees were sitting and chanting. So most of the boys were chanting properly, and Radha Gopinath Prabhu saw one boy. He had his hand in the bead bag, and he was continuously shaking like this. And his hand was also shaking like this. Have you seen some devotees chant? Huh? So he thought I should teach him how not required to chant necessarily like this. But he was like very intense. He had closed his eyes and his hand was shaking. ऐसा कर रहे. So Pruji went. He said, wait. I'll show you how to chant. Give your bead bag to me. तो उसने bead bag दिया. Pruji put his hand inside. देखा तो अंदर माला ही नहीं. अंदर माला ही नहीं था. ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने देखा सब लोग ऐसे करते तो मैं भी ऐसे करने लग गया. है ना. हर किसी का हाथ बीड़ी बैग में, तो मैंने भी हाथ डाल दिया बीड़ी बैग में. हर कोई ऐसा ऐसा हिलता है तो मैं भी हिलना चालू कर दिया. मुझे क्या पता इसमें माला भी होता है. अरे बोला ये है देखो. सो मेनी प्रैक्टिसेस वी पिकअप ना. अच्छा ऐसे करता है, हमें भी ऐसे करो. बट वी नेवर क्वेश्चन व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाई इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन. तो बुक रीडिंग, हाँ जी, हाँ हो गया, बुक रीडिंग हो गया, आधा घंटा बुक रीडिंग हो गया, हियरिंग भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया. बट इज इट रियली गोइंग इनसाइड? Is it really sinking in? Are you really understanding what you are reading? If you are not able to understand, it's important. Now, so many mentors are available. We can always sit with them, read with them, and make sure that the the churning or the stirring is happening at very deep inside. जितना गहराई में आप जाओगे उतना अच्छे से रबड़ी बनेगा. और जितना सुपरफिशियली प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी स्मेल आने लगेगा. किसका? जलने का. फिर समझ आएगा ये भक्त अभी जल गया है. अभी ये भक्त परेशान हो गया है. अभी इसका बहुत जल्दी गौर प्रेमानंद है. इसको बहुत जल्दी वेसल से बाहर आना पड़ेगा. क्योंकि अभी ये जल गया है. तो अगर आपको जलना नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी गो वेरी डीप. एंड hearing is the process which makes us very deep inside. That's why it's very important we never skip hearing. Because many devotees, they feel, Guru, chanting is enough. Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam, eva kevalam. Kalau nasti eva gatiranyatha.
Yes, holy name is everything, but if you do not hear Krishna Katha, no, if you do not understand uh, the tattva properly, we will not be able to chant holy names properly. So to go deep inside our Krishna consciousness, it's very important that we hear, and not just hear, we also contemplate on what we are hearing. We churn on what we are hearing. We discuss what we are hearing. So many voices, they have this very nice rule: breakfast time, lunch time, dinner time. All three times, duties have to share what they have read today. Correct? You all do hear. Everyone has to speak. क्या पढ़ा? क्या सुना? बताइए. So when such sharing happens, we'll come to know how much deep we are being. And when we have to share, naturally we will try to uh, hear or read with more attention, and more depth. And also we can take association of devotees who have gone very deep into their spiritual life. जितना deep जाओगे, उतने gems पाओगे. Like in an ocean also, if you just stay on the surface, what do you get on the surface of ocean? Huh? Salt on the surface of ocean. Garbage. क्या मिलता है? किसी का जूता, किसी की प्लास्टिक की बॉटल, किसी का डेड बॉडी. ठीक है, सरफेस पे पूरा कचरा होता है. बट यू गो वेरी डीप इनटू द ओशन, deep inside at the bottom you'll find pearls, find gems. You find so many valuable, articles, which is deep inside ocean. Same way in our heart also. You just remain superficial in the bhakti, then you'll just at the max get some, I won't say garbage, but it will not be a very valuable thing. But if you go deep inside, you'll find gems. So going deep inside is like understanding, why we are doing what we are doing. If you don't focus on this, very soon you'll find you got deviated from the path. Have you heard of this story told by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in Upadesha Upakhyane of children who are playing cricket? सुना है आपने story? नहीं? All of you have heard about gully cricket, जो गली में खेलते हैं. So once there was a man in front of his house. There was a lane, and as that happens, and as this happens everywhere, in this particular lane also, many kids they gathered and they wanted to play cricket. When they are playing cricket, uh, obviously no one will play cricket with complete silence. They're making a lot of noise, which was disturbing this owner of this building very much. And he was also very much afraid that anytime the ball may hit my car or my windows and the glasses would break. So he was not happy. He came to this kid, so he started arguing, hey, you cannot play here. बच्चे भी कम नहीं थे. बोले तुम्हारा रास्ता नहीं है. रास्ता खरीद लिया है क्या घर खरीदने से? घर तुम्हारा होगा, रास्ता तुम्हारा नहीं. हम यहीं पे खेलेंगे. तो उन्होंने बोला तुम यहाँ पे नहीं खेलो, नहीं हम यहीं पे खेलेंगे. एंड दिस किड्स आर बिग इन नंबर, 25 लोग थे. तो ये कुछ बोल नहीं पाया. बोले ठीक है, मैं और कुछ सोचता हूँ. आई थिंक ऑफ सम टेक्निक. He went inside and whole day they were playing and they were making a lot of noise and he was thinking what to do. Then he got one idea. Next day morning, when again the kids had gathered to play, it was vacation time, so every day they were playing morning to evening, whole day. He got an idea. He called all of them for a meeting. He said, देखो बच्चों, अगर आज तुम सुबह से शाम तक ईमानदारी से दिन भर खेलोगे तो मैं तुमको 500 रुपए दूंगा. तो बच्चे लोग पागल हो गए. ये क्या है? कल तो भगाने की बात कर रहा था. Today studying he is going to reward us 500 rupees. I say आम, क्या आम के आम गुठली के भी दाम. खेलो तो खेलो, उसका मजा, बाद में पैसा भी मिलेगा. अरे क्यों नहीं, चले बढ़िया है. तो दिन भर खेला उन्होंने और शाम को ईमानदारी से सब लोग आ गए. बोले अंकल 500 रुपए. तो अंकल ने 500 रुपए निकाले और ये लोग पागल वहां पे पार्टी करेंगे. 25 लोग, 500 रुपए, दे हैड नाइस पार्टी. बोले बढ़िया है.
वेकेशन का बढ़िया अरेंजमेंट हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन दे केम, ही सेड देखो अच्छे से खेलना, कितना मिलेगा? 500। खुश। 3-4 दिन चल गया, ये लोग खेलने लग गए। दिन भर खेलने का, शाम को पार्टी करने का। 5वें दिन वापस जब बच्चे आए खेलने के लिए, दिस ओनर कॉल्ड, फिर देखो बच्चों क्या है, आई एम फेसिंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आज मैं 500 नहीं, आज सिर्फ 250 रुपये दूंगा। आई कैन गिव ओनली 250 रुपीज टू। तो बच्चे बोले रुको रुको रुको, हमको सोचना पड़ेगा, हम क्या फुकट के खिलाड़ी है? ऐसे थोड़ी है, हम मीटिंग करेंगे बताएंगे। तो उन सबने मीटिंग किया, और फिर बोला ठीक है, हमने सोचा है अगर तुम 250 रुपये देंगे तो हम सिर्फ आधा दिन खेलेंगे, हम पूरा दिन नहीं खेलेंगे, हमारी भी कुछ इज्जत है। बोले ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन खेलो यार, आपका खेल मुझे बहुत पसंद आ। ठीक है। तो आधा दिन बराबर खेले। इसके पास आए, बोले देखो हमारा आधा दिन हो गया है, 250 रुपये। 3-4 दिन ऐसे चला। फिर उसके बाद में ओनर ने बोला देखो बच्चों, अब ना मेरा पैसा और भी खत्म हो गया, आई डोंट हैव मच मनी विथ मी नाउ, आई कैन गिव यू ओनली 100 रुपीज टुडे। तो बच्चे बोले हम एक ही घंटा खेलेंगे फिर। बोले चलेगा, लेकिन 1 घंटा तो खेलो। बोले देखो 1 घंटा सिर्फ चलेगा। तो 3-4 दिन 1 घंटा खेले, और पैसा लेके जाते थे। उसके बाद में ओनर ने बोला देखो भैया, अभी मैं हो गया हूँ कंगाल, अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं देने के लिए। बच्चे बोले फिर हम भी नहीं खेलेंगे, क्या पुकड़ के खिलाड़ी है? विल नॉट प्ले हियर, विल प्ले समवेयर एल्स। आप समझे क्या हुआ यहाँ पे? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये स्टोरी बताते हैं, लेकिन इसका जो पर्पट है वो बहुत डीप है। एनीबडी नोस व्हाट इज द लेसन फ्रॉम दिस? यू गॉट द स्टोरी राइट? सो व्हाट इज द लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी? ठीक है, बट व्हाट इज द लेसन वी लर्न? अच्छा लेसन है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ अलग लेसन बताते हैं। सो विल लर्न 2 lessons here. uh, See, first lesson is this: how Maya acts in our life. The children had come there to play, but not for money. They just wanted to play. But what Maya did, Maya started giving money, and eventually the goal of playing went in the background. The goal of obtaining money became the forefront. करेक्ट ना? वैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, खेल बैकग्राउंड में चल गया। करेक्ट ना? सेम वे, व्हाई डिड वी कम हियर? व्हाई डिड वी कम टू वॉइस? हाँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए। और क्यों आए हम यहाँ पे? क्यों आए हैं हम वॉइस में? अच्छा संग लेने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए। क्या है, हम इसलिए वॉइस में आए हैं क्योंकि और कोई वॉइस में आया है? आर वी shifting to voice because somebody else is serving Krishna here, or somebody else is not serving Krishna here? We have come here because we want to serve Krishna, we want to please Krishna, and we want to purify our heart. We come like this. After some time what happens? After some days when you see that Ruchi, that devotee is not doing seva, I am only doing seva. Why he is given less seva, why I am given more seva? ऐसा क्यों कर रहे हैं? आई नॉट डू सेवा। आर यू गेटिंग? देखा आपने, शुरुआत में हम आते हैं सेवा करने के लिए, लेकिन कुछ और बोलते हैं अरे कुछ वो तो उतना सेवा नहीं करता है, सेवा मुझे ही मिल रहा है। लेकिन आप आए थे किस लिए? सेवा के लिए। बट our main goal of serving Krishna goes in the background, and other goals, other things come in front. Comparison. Hmm? Why he is given more preference? Why he is given that opportunity? Why he is given that Mahaprasad? Hmm? Why that favor to that devotee? But you did not come for that. You just came for serving Krishna, which is always available. You can continue to do that. Huh? But we close our eyes to that, the main purpose for which we came here, and we become more focused on what others are doing.
Correct? And that's how Maya tricks us. Obviously, he tells in different aspects these lessons. He says that we come to bhakti for attaining Krishna, but when you start practicing bhakti, Krishna will give us many other benefits. Krishna will give you fame. Krishna will give you name. Krishna will give you glorification. And afterwards, person starts doing bhakti for these things, not for the main purpose why he came. What is the purpose of mango tree? To get mangoes. And that's another thing that it will also give you shade. The purpose of mango tree is not to get shade. Getting shade is a side benefit. No, but main thing is mango should come. Mango is not coming. What is the mango tree? Same way, the purpose of bhakti is for getting Krishna prem. But unfortunately, after practicing bhakti for some time, when we get the benefits from bhakti, we start getting appreciation, glorification, you start getting donations. Very soon, person will start doing bhakti for that thing and not the main thing why he came. That's why one has to become very alert. One has to become very focused. Why am I doing what am I doing? Or another thing we can apply this thing in our life is we are practicing right now. Why do we come here? So that we can attend morning program, so that we can do all this practices, Mangalarti, Narasimharti, Tulsi Arati, Bhagavatam class. But you'll see after some time, we do all this because there is a rule. Because I have to put P at 4:30. That's why everyone is jumping in at 4:30. And you come to know, आज morning of in charge नहीं है. There is no morning of in charge. Then, आज सोते रहो. Are you getting? So after some time, you start practicing because there is a rule in voice. Because there are rules and regulations, ये करना पड़ेगा, इसलिए कर रहा हूँ. But in beginning, I did not do that for that rule. I did it because I wanted to please Krishna. So we should be very alert. We should be very careful that I'm practicing bhakti at depth and not only superficially. I don't get carried away by the superficial benefits of bhakti. Okay, then what we'll have to do? Who are our expert remedy makers here? आपने घुमाना चालू किया, पलटा लगा रहा है, सरफेस पे घिस रहा है, फिर क्या करना होगा? हाँ, ओके, उसका कंसिस्टेंसी चेक करना पड़ेगा. करेक्ट. ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना होना चाहिए? इतना भी होना चाहिए कि पत्थर बन जाए. करेक्ट. ना ही उतना लिक्विड होना चाहिए कि रबड़ी लगे नहीं. इट हैज टू गेट अ परफेक्ट consistency. So when we also are staying here, we have to keep checking ourselves. I am making progress. So we have the sadhana card that we fill. Along with sadhana card, we also have one counselor report, weekly, monthly, whatever. There will be some reports that you need to fill, which we should regularly fill and analyze what is happening. बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आगे जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ? And only you can understand. Nobody else can understand this. Prabhupada said that when a person is eating, he doesn't have to take certificate from somebody else whether my hunger is getting satisfied or not. He himself will understand. Same way, it's very important that we analyze, am I progressing? So in the older Sadhana card that we had got from His Grace Radheshyam, we had this NOI, 60, 18, yeah, 18 items, which we had to analyze. How much overeating am I doing? How much lazy I am, how much atyahar, how much prajalpa did I do. It's best if we can analyze daily basis or at least weekly basis and see whether am I progressing. Okay, after that, when you understand that consistency is becoming good, then what we have to do? Huh? Cool down. When do we add sugar? शुगर डालना पड़ेगा कि नहीं, कि बिना शुगर का रबड़ी? शुगर डालना पड़ेगा. Actually, when we are making rabdi, when the consistency is also going well, one problem will come. When so many people are making rabdi, क्या होगा?
जब इतने सारे भक्त लोग एक साथ में, हर कोई रबड़ी बना रहा है, राइट? सबका कॉमन रबड़ी बन रहा है क्या? नहीं ना, कॉमन रबड़ी बन रहा है तो क्या है, गुरु जी आप थोड़ा सा पलटा चलाओ, मैं थोड़ा सो के आता हूँ, फिर अभी आप चलाओ, ऐसा नहीं है ना कि आप दो माला करो मैं सो के आता हूँ, फिर आगे की दो माला मैं करूंगा, एक कॉमन माला चल रहा है वॉइस में, ऐसा होता है? नहीं ना, हर किसी को अपना रबड़ी बनाना पड़ेगा। एक कॉमन रबड़ी तो नहीं बन रहा है जो हर कोई खाएगा एंड में। किचन में ही होता है वो लेकिन यहाँ पे when it is connected to our spiritual life, we all have to make our own rabdi. So imagine all of you are sitting here. हर किसी का अपना अपना स्टोव है, हर किसी का अपना अपना कढ़ाई है, हर किसी का अपना अपना दूध है, और किसी का अपना अपना पलटा है। और जगह इतना ही है, तो कैसा होगा? इमेजिन कीजिए सीन। इस टेम्पल हॉल में यहाँ पे कितने डिवोटीज है? हाउ मेनी इनमेट्स आर हियर? 12? 13? हाँ, some rough number, 15? 12, okay, 12 devotees are making the rabdi in this hall. ना, तो 12 यहाँ पे लगा है, 12 कढ़ाई है, और 12 कुक्स एक साथ में पलटा घुमा रहे हैं, तो क्या होगा? क्या चांस, क्या है, क्या होने का चांस है? हाँ, कंपटीशन बढ़ेगा, हाँ। किसका अच्छे से बन रहा है? ओके, दैट इज वन थिंग दैट विल हैपन. So we should be very careful about competition when you're practicing and social devotees. One will obviously, if that competition is helping you to take more mm, intense or more better steps in Krishna consciousness, that is healthy competition. That's good. But competition should not be en envious competition. अरे उसका अच्छा बन रहा है, उसके इसमें कुछ तो डालना पड़ेगा अभी कुछ तो डालना पड़ेगा। तो कुक, बताओ क्या डालने से उसका रबड़ी खराब हो जाएगा? कुछ तो डालना, वो बहुत अच्छा भक्ति कर रहा है, बहुत ज्यादा सेवा कर रहा है, उसका पैर कैसे तो खींचना पड़ेगा। सो दैट शुड नॉट बी एटीट्यूड. व्हाट एल्स में हैपन? इमेजिन व्हेन 12 कुक्स हर तरफ से घूम घूम के पलटा घुमा रहे हैं, तो क्या होगा? शोर होगा। और क्या होगा? गर्मी बढ़ेगा बहुत, है ना? गर्मी बहुत बढ़ेगा, सहन नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को। और क्या होगा? आपस में टकराएंगे। बहुत अच्छे। आप ऐसा घुमा रहे हो और वो ऐसा घुमा रहा है, और सबका ध्यान किधर है? अपनी रबड़ी में। सबका ध्यान अपनी रबड़ी में है, और पलटा ऐसा घूमेगा, उसका ऐसा घूमेगा, तो आपको पलटा पीछे लगेगा आपका पलटा उसको लगेगा। ऐसा जब होगा, और गर्मी भी है, आग ही आग है तो पहले आदमी का दिमाग गर्म है, और उसमें उसका पलटा लग गया, किसी का धक्का लग गया, किसी के रबड़ी से थोड़ा सा छींटा उड़ गया, आपको चटका लग गया, गरम लग गया, तो क्या होगा? हाँ, हाँ, गुस्सा आएगा, मतलब ये पलटा अभी ये पलटा अभी सिर्फ रबड़ी नहीं बनाएगा, ये अभी और कुछ भी करेगा क्या करेगा? ये पलटा इसके सर पे बहुत अच्छा दिखेगा। हम्म? ले बेटा मैं तेरे को बताता हूँ। तो जल्दी ही ये जो किचन है जहाँ पे इतने सारे भक्त रबड़ी बना रहे हैं, वो महाभारत का युद्ध भूमि बन जाएगा। करेक्ट ना, चांसेस है। ये मार रहा है पलटा उसको, वो बोलेगा ये तूने मेरे दोस्त को मारा, फिर मैं बताता हूँ तेरे को। वेरी soon everyone will start beating each other. Lot of chances when so many people come together and they are focused in deepening their own spiritual life, there can be heat, there will be difficulties. तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे? क्या क्या रिएक्शन आ सकता है? तो जी बहुत हो गया, यहाँ पे ना रबड़ी नहीं बनने वाला, मैं मेरा कढ़ाई पैक करके जाता हूँ मेरे हॉस्टल में, वहां पे शांति से, बिना किसी के इंटरफेरेंस से, अकेले में मस्त रबड़ी बनाऊंगा। करेक्ट विचार आएगा? करेक्ट ना, थॉट में कहाँ आप रोज ये इतने सारे लोगों के बीच में, हर जगह पे लाइन, बाथरूम में जाना है तो लाइन, कपड़े सुखाना है तो लाइन, बकेट चाहिए तो लाइन, प्लेट धोना है तो लाइन, वहां पे करो, सब जगह पे लाइन। रुचि ना, हॉस्टल में मेरा अच्छा रबड़ी बनेगा। करेक्ट। किसको किसको लगता है हॉस्टल में और अच्छा रबड़ी बनेगा? शांति से चैंटिंग होगा, कोई आपको उठाएगा नहीं,
आप समाधि में बहुत अच्छा जप कर पाओगे। एकदम प्रोपा जी का धुन लगा के, डिम लाइट करके। So we should understand that association is the most important gift that we have got. When Krishna is most pleased with someone, what he will gift him with? iPhone, Mac, नहीं? क्या गिफ्ट देंगे? कृष्ण आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, क्या देंगे? अच्छा प्लेसमेंट दे देंगे, नहीं तो यूनिवर्सिटी टॉपर बना देंगे, डिवोटीज का संग देंगे। Association of devotees is the greatest gift Krishna gives to anyone. And that gift Krishna does not give so easily. But association of devotees is most vital, at the same time, most dangerous. Without association, we cannot survive. But in association, we can destroy our bhakti if we are not very careful. If we do Vaishnava aparadh, then Krishna will become most displeased with us. So association of devotees is compared to the cylinder that we have in our kitchen. Without cylinder, can we survive? We cannot. We cannot do any cooking. We cannot offering to Krishna without cylinder. But is that cylinder dangerous? Very dangerous. If you don't handle it properly, मेरे साथ में 2 बार हो चुका है, 2 वॉइसेस में सिलेंडर में आग लगी। अच्छा, रवि प्रो, you were there? रवि प्रो was there. I was sitting in the room and धाड़ जोर से आवाज आई। देखा हमने तो सिलेंडर का जो पाइप है वो निकल चुका था और उसको आग लग गई थी, और सिलेंडर घूम रहा था पूरे। सिलेंडर वो जो किचन से बाहर जो स्टोर रूम है, करेक्ट, एचबीटीयू में, हाँ, वो सिलेंडर गिर गया और गोल गोल घूम रहा था, और उसका जो पाइप है, पाइप के एंड में आग लगी थी, और वो सांप के जैसा ऐसा ऐसा घूम रहा है, जहां जहां पे देखो आग लग रहा है वो। तो ऊपर आग लगी, पीओपी नीचे गिर गया। हम्म, यहाँ पे दरवाजे पे आग लग गई, स्विच बोर्ड पे आग लग गई। और मैं देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं। हम सबने सोचा बस अभी यहाँ से भागो। इट्स वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। अनदर टाइम मैंने सारे ऑल्सो, we had a fire in the cylinder. It was very dangerous. कभी भी वो, उसमें तो, इसमें तो पाइप में आग लगी, उसमें तो डायरेक्ट सिलेंडर के मुंह पे big fire. So association of devotees is like that. It can help you. Without that, you cannot make advancement. But if you do aparadh, if you're not very careful, same association will become the cause of your degradation. अपराध करेंगे और भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। So that's why we should learn Vaishnava etiquettes, Vaishnava sadachar. We should learn the Vaishnava mood, Vaishnava lifestyle, and pray to Krishna that when I am in this association of devotees, may I not offend anyone, may I not displease anyone, because I don't want to leave this association. At the same time, I don't want to, this association to become the main problem, main hindrance in my life. So again, this Grisratha Gopinath Prabhu, he gave a very nice example. He said there is a particular animal called porcupine. You know porcupines? You heard? Porcupines are like this small rodents, like mongoose or some big rats, and they have a lot of thorns on their body. And generally, they are found in all the very cold places where there is a lot of snow, Himalaya kind of place. Generally, these porcupines are found there. So these porcupines, generally, other animals, they survive themselves in snow because of their thick hairs. कौन कौन सर्वाइव करते हैं अपने आप को? Like bears, भालू. They have very thick hairs, because of which they can sustain themselves in that chilly winters. But porcupines, their hairs are not there. They have these thorns. There's sufficient gap in between those thorns for the cold to enter and touch their body. So it is said, this people who have studied the life of porcupines, they say that in the chilly winters, these porcupines, they all come together.
एंड स्टे वेरी क्लोज टू ईच अदर, एकदम टाइट। जब ठंड होती है ना, तो सब लोग एकदम एक दूसरे को चिपक के बैठना पसंद करते हैं घर में, करे ना। वो माँ बैठी है, वो बेटा है ना, बेटी है, भाई बहन, सब एकदम एकदम कस के बैठते हैं, क्योंकि गर्मी से, एक दूसरे की गर्मी से नो, दे कैन सस्टेन द कोल्ड। सेम with these porcupines, they come very close to each other. But what is the problem? When the porcupines come together, and the closer they come, the thorns of their bodies prick another body, and blood comes out. It's important for them to come close together to tolerate the heat. Sorry, tolerate the cold and generate the heat. But when they come close to each other, they prick each other, and blood comes. If a porcupine feels कि ये बहुत ज्यादा हो गया, मैं इसके पास जा रहा हूँ, एक खून निकाल रहा है मेरा, मैं जा रहा हूँ, इफ ही गोज अवे एंड स्टेज अवे फॉर सम टाइम, विद इन अ डे दैट porcupine is found dead, मर जाता है ठंड के कारण। And that is very much applicable to the association of devotees. You stay with devotees, we all have our own thoughts, we all have our own personalities. When we come close to each other, तो थोड़ा प्रिक होगा, एक दूसरे से खून निकलेगा, होता है। बट इफ यू से प्रभु जी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, लेट मी गो अवे फ्रॉम डिवोटीज, go away from devotees, very soon you'll be found, you'll be found, you'll be found dead, spiritually dead, खत्म हो गया वो, उसका गौर प्रेमानंदे, हरी हरी वो निताय गौर प्रेमानंदे, उसका खात्मा हो गया। We will not be able to survive, or even if he survives, that bhakti will not be very uh, full of substance. Somehow we'll just drag on. That's why association is something very, very important. We should never compromise on this one principle in our life. साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। एक ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई वी हैव शिफ्टेड टू वॉइस इज to get association, and in that association you should try to serve and please those devotees. To the degree you utilize this association nicely, to that degree you will flourish in your spiritual life. So I have some more points to tell about this association. Without association, we can ask two questions: what will be the quality of my bhakti, and what will be the duration of such bhakti? Without association, what will be quality of my bhakti, and what will be the duration of such a bhakti? Because bhakti means something that is done in association. अगर association नहीं है तो क्वालिटी भी नहीं आएगा, ना ही लॉन्ग ड्यूरेशन आएगा हमारे भक्ति में। तो कृष्णास कविराज गोस्वामी, such an advanced Vaishnava, such a elevated personality, even he says that for an old man, how important is the stick? Most important. For an old man, a hunchbacked man, he cannot walk without a stick. Same way he says, this association of devotees is like the stick, walking stick for me. तो अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसको अगर स्टिक मिला या फिर नहीं मिला, तो क्या क्या होगा? हाँ, ज्यादा दूर चल नहीं पाएगा, ओके, एंड गिर जाएगा, एंड even if he walks, he will walk very slowly. बिना, without stick, one will walk very slowly, and without stick, he will not be able to walk very safely. Same way, without association, our walk in bhakti will be very, very slow, and it will not be very safe. So, as Grace Gaur Gopal Prabhu, once he was sharing the importance of association, especially for doing sadhana. He was telling he was just sharing his own experience. He said that I thought one day association ना devotees के बीच में chanting करना बहुत मुश्किल होता है, ये जोर से चिल्लाता है, ये अलग अलग चेहरे बताता है, एक्सप्रेशन देता है,
बहुत गर्मी होता है इससे अच्छा है मैं अपने रूम में जाके चैंटिंग करता हूँ. सो इन हिज रूम ही हैड वन ऑफिस चेयर, देखे आपने, रोटेटिंग चेयर. You can sit computer chair. Good thing we don't have that rotating chair here, because generally whichever chairs people get to sit on, they do some kind of play with that. We used to have earlier plastic chairs, so people would recline the chair and tard आवाज आता था वॉइस में, टूट गया, ये बेंड हो गया, उससे टूट गया. तो this tendency you do some play. So he went and sat on his rotating office chair, the computer chair, and because you're sitting on that, you're chanting. He said after one round I just gave one push with my leg, और मैं एक चक्कर लिया. I rotated once. हो देखा ना, पैर से आप मुझे झटका मारो तो आप घूम जाते हो, रोटेटिंग चेयर. ये अच्छा है, एक एक राउंड के बाद में एक राउंड फ्रेश हो जाऊंगा, थोड़ा अच्छे से चैंटिंग करूँ. तो दूसरा राउंड चैंट किया, वापस जर्क मारा. ही हैड अनदर राउंड. दो राउंड हो गया, दो राउंड. आफ्टर सम टाइम ही ऑब्जर्व दैट चैंटिंग भी चल रहा है और रोटेटिंग भी चल रहा है कंटिन्यूस. देख रहे हैं? ऐसा भी राउंड चल रहा है और ये भी राउंड चल रहा है ना, पूरा घूम रहे हो. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एंड देन ही अंडरस्टूड, सिर्फ ये राउंड चल रहा है, ये राउंड रुक गया है. तो सिर्फ गोली घूम रहा था, ऐसे 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 ऐसे, तो ये राउंड रुक गया. Then he told, that's why in Kali Yuga, although in earlier ages people would do their sadhana very secretly, like yesterday I was telling, sadhana was secret, Guru mantra was secret, Japamala was secret. In Kali Yuga, you don't have to keep your sadhana performance secret. Good to do in public. At least लाज लज्जा के कारण, शर्म के कारण, we will try our best to chant. All of you can observe. You chant your round 16 rounds by locking yourself in the room alone. कैसा होगा? पहले बैठे बैठे करेंगे, बाद में लेटे लेटे करेंगे, हाँ, फिर सो जाएंगे. करेंगे बाद में, माला प्रभु जी बहुत अच्छा माला हुआ आज. 16 राउंड्स कंप्लीटेड. शायद रोज ऐसा माला करने का अवसर मिले. लेकिन भक्तों के साथ में करते हैं, तकलीफ होता है, लेकिन यही तकलीफ हमको झेलना पड़ेगा, तभी वो उस दूध का रबड़ी बनेगा. ये जो अग्नि है उसको सहना पड़ेगा. अगर ये अग्नि को नहीं सहा, हम कहीं यहाँ वहाँ चले गए, तो सॉरी सर, आपका रबड़ी नहीं बनेगा, बाकी सबका रबड़ी बन जाएगा, आपका दूध वैसे वैसा ही रहेगा. सो इट इज एक्सप्लेन दैट इन इन द मिलिट्री, when the lockdown was going on, most of the jobs were work from home. Correct, no? All the people, even now also many people are doing work from home. But this one thing is there that cannot be work from home, although there is no work on the field. Most of the people have work on the job, but still they work from home. But this one work is there, that is of military people. There is no work on the field right now. There is no war going on, but still they were not given work from home, even during lockdown. And to keep them on the field, government has to spend crores of rupees. कुछ काम नहीं है उन लोगों को. जो मिलिट्री वाले हैं, सोल्जर्स हैं, वो दिन भर सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, अपना सुबह परेड करते हैं, कुछ तो कुछ हाथ पैर हिलाते रहते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं बंदूक चलाने का. लेकिन उनको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को crores of rupees they have to pay. Government will benefit a lot if they announce work from home for soldiers. Work from home, whenever war comes, we'll call you. Good idea, na? We can give this suggestion to the government of India. Correct? You can save crores of rupees. इतने सारे आपके लाखों सोल्जर्स हैं, सबको घर पे भेज दो, सबका खाना पीना अपने खुद के सैलरी से चलेगा. हाँ, और जब भी वॉर आएगा बुला लेना सबको. अच्छा आइडिया है. How many of you feel this good idea? Give them work from home. Why not? हाँ, घर पे जाएंगे तो लड़ना ही भूल जाएंगे. और
घर पे जाएंगे तो साइज डबल होके आएगा, साइज उनका। वो जाएंगे नो 10 की नो जो भी है, 50 किलो का वजन लेके आएंगे, 100 किलो का 80 किलो का वजन लेके। काम ही नहीं है दिन भर, सैलरी आ रहा है, सब हो रहा है, खा खा के पी पी के दौड़ना भी भूल जाएंगे। दैट्स व्हाई द सोल्जर्स rigorous training every day as if there is war today. Their every day as if their every day is as if there is a war today. So same way devotees can never do work from home. We can do work from voice. We can do work from temple, but doing work from home for a very long time. ध्रुव जी, हमारा युद्ध हम घर से लड़ेंगे, ठीक है? Especially if the parents are not very favorable. Obviously, those who are grahasthas very nicely practicing, they have association, they can do work from home. I mean, they can do bhakti from home. But in general, for devotees who in voice, whose parents are very much against their practice, if they say, Prabhuji, I will do bhakti from home, sorry. आप जितने अनर्थों को लेके गए थे, उसके डबल लेके आएंगे वापस। जो निकालना था, निकालना छोड़ दो, ज्यादा लेके आ जाए। It will become very difficult to make progress. So government is investing so much to keep these people on the edge. The same way, even if it is like lockdown time, many devotees had gone home for a very long time, and they costed their spiritual life. So, but better is they spend some energy and be with the devotees so that they're always there, ready to fight the battle. And our life is like the military life, is it not? मिलिट्री में क्या होता है? ट्रेनिंग होता है, सुबह सुबह परेड होता है, हमारा भी होता है। लेफ्ट राइट लेफ्ट होता है ना, हमारा भी होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? मंगल आरती, लेफ्ट राइट लेफ्ट, the Swami steps that we do. So first thing that they do in military is come and salute to the sergeant, the chief man. You come and salute. Same way, same thing we also do. We come and salute to the founder Acharya. We offer our obeisances to him. We pray to him, and then in temple we have left right left as the beginning. We do beginning with the Mangal Arati, and then they say there are instructions for the day. The instructions for the day is the class for the day. And then one has to begin shooting. That is our chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. It's very important that we stay in association. This is one thing that cannot be done work from home. That has to be done in association of devotees. Like that. So another thing we see in this military people when they are going, especially in the snow-filled area, if 25 soldiers are walking together in this snow-filled area, you know how they walk? 25 लोग हैं, बस चल रहे हैं, बंदूक लेके दौड़ रहे हैं, ऐसे चलते हैं। पता है किसी को कैसे चलते हैं? हाँ, एक चेन बांधते हैं, एक रस्सी बांधते हैं, पहले आदमी से 25वें आदमी तक सबको एक रस्सी बांधा रहता है। हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, बंधा होता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि कभी भी कोई धस सकता है। वी डोंट नो बिकॉज इट मे अपीयर अ लैंड बट इट मे बी अ वेल, बिकॉज वेल इज ऑल्सो कवर्ड विथ स्नो। जो कुआं होता है वो भी स्नो से कवर हो गया रहता है। आप चल रहे हो 25 लोग चल रहे, पता चले 5 ही लोग पहुंचे बाकी 20 लोग टप 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 अंदर चले गए, खत्म हो गए। व्हाट इज यूज? तो दे ऑल टाई ईच अदर सो दैट जैसे ही एक आदमी गिरा, बाकी लोग उसको खींच लेते, फिर वो गिरा तो दूसरे लोग उसको खींचते। दैट इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। जितना एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, धंसने से बच जाएंगे। अगर मुझे कोई नहीं चाहिए मेरे जीवन में, मैं मेरा जीवन अपने आप चलाऊंगा। ऑल द बेस्ट, हम मिलेंगे अगले जीवन में, है ना? धस जाएंगे हम। इट विल नॉट बी पॉसिबल टू सस्टेन अवरसेल्व्स। सो द मोर स्ट्रांगली वी होल्ड ईच अदर, more tightly we hold each other,
That's why it's very important to cultivate loving relationships amongst devotees. बहुत प्रेम भरा संबंध स्थापित करना बहुत आवश्यक है डिवोटीज के बीच में. Because when loving relationships are there, we will hold each other very strongly, very tightly. And to the degree we do this, to that degree we will be safe in association of devotees. So, okay, so coming now to the last phase of there is a lot to be spoken about association, but we'll stop that theme now. So we will also have to add sugar. Correct, na? We'll also have to add sugar. नहीं तो वो रबड़ी रहेगा बहुत स्वादिष्ट. क्या रबड़ी है? Sugar के बिना. So what is that sugar compared to? Anyone can guess? Huh? Loving relationship between the devotees. That is sugar. उससे ही रबड़ी में sweetness आएगा. Loving relationship with devotees. And how we can cultivate that? कैसे करेंगे loving relationship? आइए प्रभु जी, आपके साथ में loving relationship कल्टिवेट करता हूँ. मिलाइए हाथ में हाथ. और कैसे करेंगे? Serving together, very nice. Loving relationship gets formed by serving Krishna together. जब साथ में आके कृष्ण की सेवा करेंगे, जैसे कृष्ण एंड सुदामा ने किया. दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में था, लेकिन दूसरे हाथ में लकड़ी था जो गुरु के लिए वो काट के लेके जा रहे थे. So in one hand service and one hand loving relationships. When we serve together, you will see, you will develop very nice loving relationships. Also when we do Krishna Katha together. So generally, anyways, people want to have some interaction with each other. And a typical interaction is, we sit with each other. मुझे पता है आज कॉलेज में क्या हुआ. मुझे पता है ये सर ने क्या बोला. मुझे पता है मेरे दोस्त ने क्या बोला. मुझे पता है वो क्या बोली. All these things will begin. And that is not going to, harbor your loving relationships. But very practical ways, sit with each other and read Prabhupada books. Sit with each other and hear some lectures. Sit with each other and read some nice books like Ramayana and discuss on these themes. That will help you to develop loving relationships. That will add a very sweet experience in your life. Another meaning of adding sugar is to find what gives me relish in Krishna consciousness and add that in your life. Krishna consciousness should not be a very dry and austere experience always. ये बहुत एकदम तपस्या भरा कड़वा अनुभव नहीं होना चाहिए. It is an experience which should be केवल आनंद कंद. भक्ति राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुखम कर्तुम अव्ययम. जो भक्ति कर रहा है वो सुखी होना चाहिए, वो सुखी दिखना चाहिए. One of the first symptom of a true devotee is happy. Chant Hare Krishna and be happy. हम लोग क्या करते हैं चैंटिंग के टाइम पे? अरे क्या है, सुबह सुबह लगा दिया, कहाँ उठा दिया, अच्छी नींद आ गई थी. कितने दिनों से सोया नहीं हूँ, कब जाऊंगा घर और अनुभव करूंगा वो सुबह की मीठी नींद को. यहाँ पे ये लोग सोने नहीं देते. तो भक्ति शुड बी अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस. And different devotees' happiness will come in different activities. Correct? Because we all are individual personalities, we all have unique tastes in bhakti. Our taste will come from different things. Can all of you share what make you taste to someone in bhakti? क्या टेस्ट देगा? प्रसादम. हरि वो अल्टीमेट. आपने अल्टीमेट आंसर बता दिया, है ना? So prasadam will give taste. So what we should do then?
बहुत प्रसाद खाना चाहिए. Obviously, so if you like prasadam, eat prasadam, no problem. Don't become artificially renounced. ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, जो भी पसंद है नहीं खाऊंगा. अगर बहुत ज्यादा ऐसा करने लग गए तो भक्ति बहुत टॉर्चर सब हो जाएगा. आप आगे जा नहीं पाओगे. पागल हो जाओगे. तो बिकॉज ऑफ द रजोगुणा दैट वी हैव, समटाइम्स वी टेक एक्सट्रीम्स इन भक्ति. We want to advance very very fast beyond our adhikar. So let us not do that. You like prasadam, then take prasadam. Express if you have some concerns with prasadam. If you are feeling prasadam is not good, you can express it to the in charge. बाबू जी प्रसाद थोड़ा अच्छा बनेगा, मेरा मेन टेस्ट यही है. यही अच्छा नहीं लग रहा है तो कहाँ टेस्ट आएगा. हरि नाम में तो ऐसी रुचि आएगी नहीं. ये एक ही टेस्ट है जो मुझे बचा के रखा है. अगर इसमें भी आप तपस्या कराओगे तो मुझे और कुछ सोचना पड़ेगा प्रभु जी. सो ओके, एक्सप्रेस एंड गेट गुड प्रसाद. व्हाट एल्स कैन मेक यू टेस्ट टू समवन इन भक्ति? Huh? Book reading. Somebody will have taste in book reading. You should try to do it more. I know one devotee. Uh, he he used to like reading. I was a new boy. I asked him first time when he shifted to voice. I said, "What do you like, Prabhu?" "Hey, I just like reading. I used to read a lot of books in my life." I said, "Take a vow today." ऐसे में बोल दिया. I was also very new. I was also staying in voice. I said, "Take a vow today." As a senior, ऐसे ही मैं थोड़ा बता देता हूँ ना. Senior हो ना, तो कुछ बोलना चाहिए. I take a vow today. Every day I should read Prabhupada books. At least 20 minutes. He took it so seriously. अभी इस बात को 15 साल हो गए. He was also brahmachari now in Pune temple. Till date, he has never missed reading half an hour Prabhupada books. आज तक. उस दिन से वॉइस में. जो he had that taste also, but he took it so seriously, cultivated it. If you don't cultivate your taste, your habits, you will lose them. आज तक एक दिन नहीं गया उनका जब उन्होंने आधा घंटा प्रभुपाद की किताब नहीं पढ़ी. And there are some proper disciples who read भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत एवरी ईयर पूरा. 1 जनवरी को स्टार्ट करेंगे और 31 दिसंबर को तीनों किताब कंप्लीट. एंड दिस आर गृहस्थस, नॉट सन्यासीज और ब्रह्मचारीज. Grihasthas, along with their job and other duties, every day they take out certain amount of time. Every day they read whole book in every year. So somebody may have taste in reading, he should cultivate that taste. That will give you more relish in your bhakti. What else? Kirtan. Hari Bol. So you like Kirtan, spend some more time in Kirtan, learn Kirtan, learn Pradanga, learn singing, explore the field of Kirtan little more. Because you have to have some higher taste which will hook you. Otherwise, it will become very difficult. If you say, bro, I don't have any higher taste here, then very soon the milk will go out. You'll get burnt and go out, or it not have any taste. So some devotees have taste in deity worship. They spend a lot of time in decorating the altar and doing a lot of arrangements for the pleasure of the deities. And somebody has taste in cooking. I know one boy, when he was shifting into voice, I said, "What are you looking forward to in your voice stay?" Meeting interview. What are you looking forward to in your voice stay? He said, "प्रभु मुझे ना बचपन से नींद में जब भी सपना आता है तो मुझे किचन ही दिखता है. किचन में अलग अलग बर्तन और अलग अलग चम्मच, ओवन और अलग अलग रेसिपीज. मुझे यही बचपन से आता था. तो सबसे पहले मुझे जब वॉइस में बुलाया गया तो मैंने देखा, अरे किचन है यहाँ पे. हॉस्टल में किचन नहीं है. मैं उसी दिन डिसाइड कर लिया, कितना भी माला करना पड़ेगा चलेगा, मैं वॉइस में ही रहूंगा. तो प्रभु जी मुझे किचन दे दीजिए, मैं किचन में सेवा करना चाहता हूँ. He became very nice devotee. And what prasad he used to cook. Hmm. North, east, west, south, hmm, all all varieties. Hmm. He had heart in kitchen. Hmm. So he had that heart and he went into it. That became a higher taste for him. Just for that, he was attending morning program, chanting sounds, attending class, Mangalarti, everything. Everything he was doing. Hmm. So try to find out what is my higher taste. Hmm. क्या है जो मुझे आकर्षित करता है. Somebody likes philosophy,
Somebody likes some service, somebody likes whatever it may be. Take it seriously, cultivate it further. And then what do I do? After doing all this, शुगर भी डाल दिया, बाद में क्या करना पड़ेगा? हाँ, थोड़ा सा और चलाएंगे। आखिरी में फिर और क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करेंगे। वहां पे सब गड़बड़ हो जाएगा। दो दो स्टेप्स बाकी है अभी। एक है, हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, होता है ना, थोड़ा पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश। what can that be compared to? हाँ, हाँ, वैष्णव क्वालिटीज, वेरी नाइस। Developing Vaishnav qualities one should do. Because that is what is, see, last step in this everybody making is we have to offer it to Krishna before testing. Uh, the most important step is to offer it to Krishna. And we have to see how I will become a very good offering to Krishna. How I can become a best offering to Krishna. So I can offer everybody with sugar, fine. But if I offer everybody with cashews, pistas, cherry, it will be a better offering. Why not become a better offering to Krishna? And this is compared to Vaishnava qualities and also skills. Skills, developing certain skills, which will be very useful in serving Prabhupada. So when I develop Vaishnava qualities, I can become a very good offering. I should work upon developing Vaishnava qualities. Like there are 26 qualities of a pure devotee. And how many weeks are there in a year? 52. So one devotee had a very good idea. Say, Puji, I will practice one quality for 2 weeks. I will take one quality and focus on that one quality for 2 weeks. I will study about that quality. I will read about that quality. I will hear about that quality. I will pray for that quality. I will practice that one quality for 2 weeks. For example, cleanliness. 2 weeks. This 1 year, my vow is one quality for 2 weeks. So how I can improve my cleanliness? No, मेरे nails से लेके तो बाल तक, no, कपड़ों से लेके तो लॉकर तक, बीड बैग से लेके तो धोती कुर्ता तक. How I can clean everything and practice it for 2 weeks, that will become almost your habit. Then take second quality. In 1 year, I'll become pure devotee. Obviously, we won't become pure devotee, but we will surely be a very improved devotee than what we were. एक साल में एटलीस्ट 26 क्वालिटीज का पूरा ज्ञान तो आ जाएगा क्या है वो. Because only one quality you are meditating for 2 weeks, you can go very deep in that. So we should try to cultivate Vaishnava qualities, and also we should try to acquire certain skills which will be very useful in serving Krishna. Like our Akash bro, very skilled in all this artistic things, making so many, nice photographs and cards and calendars, and amazing, that pleases devotees so much. So somebody may have some inclination, but if you spend some time and cultivate it further, or somebody may have skills of cooking, one can learn, one can please Vaishnava so much. Somebody can learn skill of preaching, somebody can learn, so many skills are there. Some devotees I know, they write poems, some devotees write articles, some devotees play mridanga. My lord, they play such mridanga that just by hearing mridanga, people want to become devotees. क्या बजाता है, correct? How many of you felt attracted by the devotees playing mridanga in kirtan? See, so many. Ruji, एक बार ना मुझे भी बजाना है. We should learn. Yeah, we can learn how to dance, how to wear dhoti kurta properly. मैं तो नो पीछे से यहाँ से पूछ निकल रहा है, यहाँ से कोपिन निकल रहा है, यहाँ से कुछ निकल रहा है ना. How to wear tilak nicely. So many skills we can acquire so that we can become a very good offering to Krishna. And that is the last step. That the whole purpose of doing all this is so that we can become a very nice offerable dish to Krishna. That should be our constant meditation from the beginning. How my life can become a very pleasing offering to Radha Madhav.
how my life can become a very pleasing offering to Shri Shri Bhavani Thakur. And when we do like this, that will be perfection of our life. So now all of you are really very fortunate. You have shifted to voice. You have got this very special opportunity to make a transcendental rabdi out of yourself. Either you make yourself into a rabdi, otherwise allow yourself to be subjected to normal temperature pressure conditions outside, like, and get degraded. So my best wishes to all of you. My prayers, may this become a very special turning point in your life. And may not only Radha Madhav, but also may all the devotees relish the rabdi that you are making. And also you yourself become very happy with the rabdi that you have made. So if we can do that, that will be a perfection. When we are happy, when others are happy, and ultimately Radha Madhav is happy. We'll stop here. Shri Prabhupada ki jai. Samaveta Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Would you want to add something? Additional? आपका नाम क्या है? हाँ, अभिनेश प्रभु. गुरु जी आस्किंग, वो शुगर है ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो गीता हमें सिखाता है, जैसे मैंने कल भी बताया, बैलेंस. बहुत ज्यादा मत सोइए, बहुत कम मत सोइए. बहुत ज्यादा मत खाइए, बहुत कम मत खाइए. बैलेंस. यू सी वॉट एवर इज योर नीड. So just like for salt also, they say it has to be in balance. Salt is compared to the money that we have in our life, which should also be in a balance. Imagine if, salt is compared to money, people want a lot of money. तो आप प्रसाद के लिए आए और आपको प्लेट में सिर्फ नमक दिया भर भर के, कैसा लगेगा? क्या प्रसाद है हरि बोल. कैसा लगेगा? खा पाएंगे? So too much money is also a problem. And if you are given some food without any salt, खा पाएंगे? मुश्किल हो जाएगा. So no money is also a problem. Some money is required. Same way, if there is a sweet which has too much sugar, कैसा लगेगा? खाया कभी? कभी खाया ऐसा आपने? कभी कभी स्वीट राइस में राइस के बदले शुगर डाल दी. इतना मीठा होता है कि जी बाप रे, इसको हम नहीं खा पाए. एकदम कम रहेगा तो भी टेस्ट नहीं लेगा. So it has to be in a balance. How much that balance should be, how will we come to know? कुक को पूछना पड़ेगा. ठीक है. आपको जो कुक कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, वो बताएगा प्रभु जी इतना रिलेशनशिप काफी है, इससे ज्यादा मत करो. और एकदम भी इम्पर्सनल मत बन जाओ कि किसी के साथ में रिलेशनशिप ही नहीं, अपने ही दुनिया में भूत के जैसे भटक रहे वॉइस में. वो भी अच्छा नहीं. तो टेक गाइडेंस, योर मेंटर्स आर देयर, देन गाइड यू, बट कीप अ बैलेंस सो दैट जितना आपको चाहिए, नीड है, उतना काफी है. उससे ज्यादा ऐसा बताते हैं कि स्वीट राइस में दोनों बैलेंस में होना चाहिए, राइस दैट इज ग्रेन्स एंड शुगर. तो शुगर इज कंपेयर टू द लीला कथा एंड राइस इज कंपेयर टू तत्व कथा, फिलोसफी. क्या सुनना चाहिए? लीला सुनना चाहिए कि फिलोसफी सुनना चाहिए? दोनों बैलेंस में होना चाहिए. सिर्फ लीला सुनेंगे तत्व के बिना तो लाल पीला हो जाएगा. वो भक्ति में पीला हो जाएगा. ही विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इन भक्ति. वो अपराध कर बैठेगा. और सिर्फ राइस खाएगा दूध में, सिर्फ तत्व सुनेगा तो टेस्ट नहीं आएगा, बहुत ड्राई लगेगा. रोज फिर फिलोसफी 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 होगा. सो वी हैव टू हैव balance of philosophy. And so Krishna book is a very perfect book Prabhupada has written. Very nicely he's added Leela in between philosophy. The same way in spiritual life, in voice life, relationship is compared to sugar and the rice or grains is compared to seva. So there has to be good balance of both. It should not be that we do only seva, 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 no relationship. And it should not be other extreme that we do only relationship, relationship, relationship and no seva.
So it has to be balanced. And how to strike that very practically, that your mentor will tell you. Okay? I think we should stop. 8:15 was the time told to me. It's already 8:23. Let's stop here. We'll do our left, right, left now. Commanders, you ready? Hmm? Tomorrow we'll discuss on uh, something more about this, and also how we can have a spiritual vision towards the stay in voice. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanand.